Well, So, good morning from Amit University, Rajasthan. It's so good to have you here virtually. Your mic is mute. Am I audible now? Yeah, yeah. Now you're audible. Give me a moment, sir. Just give me a moment. So, warm welcome from Amit University. उनका कुछ ऑडिट चल रहा है अभी इंडस्ट्री में. Yes. So, first of all, thank you for giving time. Dr. Gaurav said that you are having some audit ongoing in the industry right now. So, Yes, sir. So, a virtual welcome to you. Myself, Dr. Sanket. I am Deputy Director here at Amity Institute of Microbial Technology. We have with us Professor Gaurav. You know him very well. We have Dr. Geeta. Our Director, Professor Asiri, he is busy with another commitment. So, he will join us as soon as possible. And if you can see in front of you, we have students from bachelor's and master's. They are all microbiology students. And we have MSc Industrial Microbiology students who are pursuing their MSc in microbiology here at Amity. So just to give you a brief overview about the place. So university started back in 2007 or something with so many different courses. And microbiology department was started in year 2012. And it was incepted by Professor Aseri and other colleagues who joined him. And since 2012, university and our department has received so many different fundings from DST PERS, DST FIST, and as you know, we are giving courses on industrial microbiology. So we have full setup for from lab scale to pilot scale fermenters and everything. We have full analytical lab, which is funded by DST PERS. So in terms of all the analytical instruments, GC, ICP, scanning electron microscope, and fermenters in the range of from around 5 liter to 50 liter capacity bioreactors. And so we are fully ready with upstream processes. And for downstream also, we have some of the lyophilizers and other things with us. So it's a full setup meant for industrial microbiology. And we do offer courses on PhD also in microbiology. So it's a comparatively smaller department as compared to other places, but it is much more efficient. And it's the only department which has been funded by DST PERS and DST FIST in the entire university. And I'm proud to say it was one of the first private universities to receive these kind of funds. And other than these government funds and everything, we do have some projects from ICMR, ICAR, as well as different kinds of CSR institutes. So it's a mainly research-based institute where students are mainly contributing. We are just providing them the means and support. And so this is a short introduction about the department. So we are very glad to see you here, and we are thankful to you that you managed to get some time from your busy schedule, that too from some audit. So I know based on my experience, when I was working in pharma companies, audits are quite tight. It's not like the way we have audits in academics or something. So do you have ISO audit, or which audit is it? Or it's US FDA audit? We have actually, sir, in-house audit now. And Oh, so it's a so, audit. so So we normally are done in two different ways. Every 6 months, you need to do internal audits. It's a quality audit. So you need to have internal auditors that will support the report and everything. So you have to go and find some faults. So it's better that you manage these faults, you get it done before the external audit will happen. So auditing is quite strict in a way, like if it's a US FDA audit, so they have normally two things in audit. Either they have some observation or they have some NC, which is non-conformity. So I don't know whether you are following stock market or these kind of news about pharma companies and anti-cancer drugs or not. So if your company gets observation, then it's fine. You need to get those things done. And if you get NCs, which is non-conformity, then your company stock will be down next morning in the news, and then you may end up losing your license or something. So audits are taken very rigorously and religiously in industry, and everybody is on their toes, even for internal audits. So once again, won't be taking much time of you. We are gathered here to listen more about you and the kind of work you are doing.
So thank you once again, and hopefully we may be able to see each other not virtually but physically here. So looking forward for that also. So over to Professor Gaurav. Yes, sir. So good morning, Dr. Ashish. Good morning, Dr. Gaurav. So let me introduce the audience to your profile, about your profile. So Dr. Ashish Gupta has done his BSc in medical microbiology from HNB Garhwal University. Following that, he has done his MSc in applied microbiology from VIT University, Vellore. And you will be very happy to know that he is one of the alumnus of Amity University. He has done his PhD from Amity University, Noida. And following that, he joined Patanjali. I think all of you are aware about Patanjali. So he joined Patanjali and he spent nearly 9 years in Patanjali in different departments like Patanjali Food Research Department, Patanjali Research Department, and so. And following that, he worked with one of the startup, US-based startup, that is L by MB. And all these both, I think all of you about aware about Patanjali, that it is working on herbal drugs, herbal formulations, food items, and so. And following that, LYMB is also a organization which was a startup, US-based startup working on herbal formulation and health and well-care. Following that, he has joined Venus Pharmaceuticals Private Limited, which is in Baddi, Himachal Pradesh, and currently is working there. Over the period of his 12 years experience, he has published around 40 papers, different book chapters, books, and he also is having few patents to his credit. So he is one of the very suitable guy to teach you or to inform you about different type of herbal products, herbal medicines, and so on. So I hope you will be using his expertise to enhance your knowledge in this area. And definitely, I think because he's my school friend, so we can also approach him for some help in future if we want to work in this area. So with these words, I would like to welcome Dr. Ashish uh, Gupta to our campus in virtual way right now, but in future, probably he will also visit physically. And over to you, Dr. Ashish. Thank you. Thank you, respected professors and students. So it is my privilege to be a part of MIT University again, in terms of like where I can share my knowledge and skills and my experience. So, Dr. Gaurav, actually, I need this one. Your audio is on. If someone like if I ask for yes and no, so they can raise their hands. Yeah. No, you can put the audio on actually. Okay, fine. Yeah. Thank you. So basically, like as Doctor mentioned about like my skills and expertise. So it is like he has mentioned about like a thesis about me. So basically, like what I believe in industries like Dr. Saket also mentioned, there's an important thing is about the regulatory part. So whatever developing you are doing, like whether it is the herbal formulation or anything, so you need to stick with the development part in terms of the regulatory. Since currently we are also going through some internal audit, but as per the earlier commitment and the promise which I made with my dear friend Gaurav, Dr. Gaurav. So I ensure like I will be part of this session. So I will be sharing my screen right now. So my screen is visible to everyone. Yes, it's visible. Yeah, it is visible now. Okay. So we'll talk about like herbal product development and the standardization.
So basically you all know about the herbal products. So we all know like in the modern medicine system, like we are facing such so many issues, not in the treatment term, but as well as the side effects. So if we consider the herbal formulation or the natural formulations of the natural product, so basically we are not ensuring the therapeutic part, but we are also ensuring the safety part also. So like we expect like it won't have like much side effect, or might be having the minimal side effects. So in that category, this herbal formulation plays a vital role in the modern healthcare. So what is herbal medicine? Herbal medicine is a like combination. It is a combination of your traditional knowledge along with the modern science. So when you are combining both things together, like the traditional knowledge and the modern science, that you can make a herbal product or the herbal medicines. So in the upcoming slides, we will able to know like what are the formulation preparations steps and what is standardization process. So the steps began from the herb selection to the final product. So it also include the basis of the herb selection, like how we are going to select the herb and how we are doing the quality evaluation later on. Then its extraction part, its standardization, and the formula development, its evaluation, and the final product. So by these following these all the steps, you may able to know or you can create any herbal product or the any herbal this supplements. So when we talk about the selection of herb, so we are knowing like there should be some basis of the selection. So basically in Ayurveda, as it is the ancient medicinal system of our Indian system. So we follow the traditional uses and the ethnopharmacology uses. So anybody knows about the ethnopharmacology? Anyone knows what is the ethnopharmacology? Raise your hands up and down. Do you know ethnopharmacology? Yes, or don't know? So then you can put that down. So maybe they are not aware about the ethnopharmacology. I tell you that what is the ethnopharm? Yes, Dr. Gaurav. They are actually beginners, most of them. So they are struggling hopefully after this Actually, they know this, but they do not know the term of this ethnopharmacology. So I tell you what is the ethnopharmacology. Um, have you used this medicine? What is it called? Like anti-malarial medicine, which is the quinine. So we all know like quinine leaves were used for the anti-malaria property, but later on it has been translated into the medicine. So basically, the traditional information and the traditional knowledge, which have been known for the therapeutic effect, have been translated into the medicine, which is the ethnopharmacology. Similarly, like traditional uses, we all know like जब हम छोटे होते थे तो जैसे हमें कभी चोट लग गई तो हमें क्या है कि मम्मी बोलती थी कि भाई हल्दी वाला दूध ले लीजिए because this is about the traditional information. Similarly, like abhi jaise usually like we face this one viral fever. Sometimes we get the dengue or chikungunya. We usually recommend like we should take this papaya leaf extract or the giloy or like kalmek. So these are the traditional herbs which have been already been mentioned in the text about their therapeutic benefits. So on the basis of those selections, we actually go forward for the formulation development. So once like you know the desired product, what kind of product you are looking for, but particularly the clinical efficacy or the therapeutic benefits, and the behind knowledge like the traditional knowledge and the ethnopharmacology, then you go for the literature review and the pharmacological evidences. So might be this I think literature review and the pharmacological evidences, these all like students are aware about it because we will be reviewing all the documents and the database
And we are also reviewing the pharmacological evidences. Pharmacological evidences means like, is there any clinical effect or the therapeutic effect which have been reported already for the particular herb. So we'll screen out those also, and then we'll check. So first we have done the traditional uses. Secondly, we have done the literature review. So once these two steps completed, we'll go for the third step. Now question comes like whether the selection of the herb which we have selected, it is widely available or not. That is very important. Maybe like sometime you have selected the Chinese herb, maybe you have selected some Korean herbs or the Thai herbs, and then you came to the with your professor like, sir, I have selected this herb and it is being used for this particular condition and we can prepare a formula. But you do not know whether this particular herb is available in the market or not in the Indian market. So in that way, it is very important the availability of the herb. And now come to the sustainability. Sustainability means like this herb should be widely available throughout the year. So if I talk about the sustainability like potato, onion, tomato, fruits, vegetable, spices, and the common herbs, the common medicinal herbs, which ashwagandha, giloy, these are the commonly medicinal herbs which are throughout the year available. So that's why we call as like availability and sustainability of the raw material. So once this availability is come out and you are sure like this is all the material is available throughout the year, then you will check the regulatory compliances, whether this particular herb is, कोई ऐसा तो नहीं है कि हर पॉइजनस कैटेगरी में आती है, या फिर कोई ये हर्ब ऐसी तो नहीं है कि कहीं मतलब WHO ने या फिर WHO GMP वालों ने या फिर आपके US FDA वालों ने या फिर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने बैन किया हुआ है. जैसे मैं आई टेक वन एग्जांपल, देयर इज अ हर्ब लाइक एकरस कैलमस. वो क्या है कि बैन है यूएस में, उसको आप यूज नहीं कर सकते. तो अब जैसे कि अब इफ यू आर प्रिपेयरिंग द हर्बल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, so you cannot use that Acarus calamus as a part of the herbal formulation. So in that way you have to make sure like the herb which you are using throughout the traditional knowledge, literature review, availability, and it should be under the compliance of the regulatory authority. So once you have done the homework of these all four categories, you can go for the development part. So till the now it is correct for everyone? It is okay for everyone? You can raise your hands. Clear to all? So shall I move? Okay, I will move further. Okay. So I've taken the one example of the ashwagandha. So which all we know like ashwagandha is very famous, and nowadays when we talk about the Ayurveda, everyone speak about the ashwagandha giloy, ashwagandha giloy. So in the traditional knowledge, it has been used for the centuries as a rasayana, like rejuvenation therapy, and it has been mentioned for the enhancing the strength, stamina, and the longevity. If we check the shloka also, so it has been mentioned in the Vaprakas Nigantu as a Valavardak, as a Rasayan Yukta, and for this. So based on that, the traditional information, this ashwagandha have been selected as a rasayana for the rejuvenation. Then we have checked the scientific validation, which is the pharmacological evidences. So we have found, so it has the contain the active compound like methanolides, and methanolides have been used for this adaptogenic, anti-stress, and the neuroprotective effect. It has been already been claimed. So once you have this idea of the therapeutic uses and availability, and we, as I mentioned, about the availability and sustainability, like it is available throughout the India and throughout the year. And then we'll check the standardization process. As it is mentioned, the methanolides. So methanolides we'll check for the quality control. So usually the ashwagandha is having like 4 to 5% of methanolides. So that means when you are going with this herb ashwagandha, so you must have this methanolide content in an appropriate amount as per the regulatory compliances. So this is about the quality check. Then we'll check the safety profile. It is a non-toxic at the therapeutic doses. And the different formulation part. So it can be prepared in this one as a powder, spray dried powder, capsules, tablets.
So these are the different possible forms of the ashwagandha, and even in the syrups also, and even in the as a effervescent tablet. So there are the possible different formulations which can come from the ashwagandha. Yeah. So afterwards, once you are able to know about the this one herb selection, then you'll check the raw material authentication. It is very important part for the herbs. Give me a moment, sir. Sorry for the short delay. So it is very important, like authentication of herbs. Might be Dr. Saket and Dr. Gaurav is aware about it because so much adulterations, especially in the herbal drug, it is possible. इवन जब हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, जैसे काली मिर्च लेने जाते हैं, तो हमें पता है कि उसमें पपाया के बीज मिल जाते हैं हमें। और अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि सैंडलवुड पाउडर जो होता है, चंदन का जो पाउडर होता है, उसमें लाल ईंट का पाउडर मिला देते हैं, रेड ब्रिक पाउडर, सो विच इज क्वाइट सिमिलर टू दैट. So these kind of adulterants actually available in the herbal material or the herbal drugs in the herbal raw material. So once as a formulator, like the formulator, like those are working in the herbal industries, they must know about and they must aware about the raw material authentication. So there are the several steps for the authentication. I have selected few of them which are quite important. Like we can check with the macroscopic and microscopic. So I take one example of this ginger. The ginger का भी जैसे हम देखते हैं macroscopic. Like macroscopic means like physical appearance. So we will able to distinguish this ginger easily. We know like it has this particular rhizome, it has so much fibers. So you can see the physical appearance by the ginger you can check. Then come to the microscopic part. In the microscopic, you will check much more fibers by the microscopy. So by that you can confirm like it is a ginger as a raw material. And this particular ginger, the herb, this raw material or extract will go through the DNA barcoding sequence. So in the DNA barcoding technique, what they do, they take this ginger which you have been procured and they matches with the data set which is available, the DNA data set. So they compare these both. So how much similarity index which comes, like if it is more similar, that means the more authenticate raw herb is present. So like the ginger raw material and this particular data set, if it matching in the 99% or 95%, so that means like your raw material has been proper. Raw material is proper. Then you check this prevention of adulteration and substitutions. So as I mentioned, like there are so many techniques also, like analytical techniques also. By that you check the adulterations, the physical appearances also, and by the further chemical tests you identify like is there any adulterant in the herbal extract or herbal raw material. So that has to be identified. And then come to the scientific parameters. So maybe you if you have focus on the previous slide, I mentioned about the ashwagandha. Ashwagandha having the bethanoloids. So now you can check the how much quantity of the ashwagandha, how much quantity of bethanoloids present in the ashwagandha. So by that you can validate your particular herb also. So there are the 4 ways: macroscopic, microscopic, DNA barcoding, adulteration check, and the scientific validation. So by these 4 techniques, you can authenticate your raw material. Shall I go to the next slide? Clear to everyone? Yes, thank you. Okay. So, because since Dr. Saket already been worked in pharma industries, so there are the three category of any product development. One is the raw material, second is the semi-finish, and third is the finished product.
So these three important category are the vital category of any product. So quality control of the herbal medicine or any medicine has to be done in these all three steps. So you will be checking QC of the raw material also, semi-finish and the finish. So once these all three steps gone through the all QC checks, then you launch the product in the market. Correct, sir? Dr. Saket, am I correct? Yeah, okay, thank you. So there are certain tests of the quality control. It began from the organoleptic. So you check with your taste, smell, color. So by this this organoleptic evaluation, then you do the physicochemical parameters, like you will be checking the moisture, extractive value, ash values, and other things. Then that sample will follow for the heavy metal contaminations, pesticides, and the microbial test. These three, heavy metal, microbes, and pesticides, are the vital test of any of the product, of any of the raw material. So the heavy metal should not be present or present in a limit. So there are the four heavy metals which are very crucial: lead, mercury, arsenic, cadmium. What are the four heavy metals which are necessary? Lead, mercury, arsenic, and cadmium. These four metals definitely has to be tested in the each and every batch of the raw material to the product. Then come to the microbial testing. In the microbial testing also, like there are the two tests. One is the total aerobic bacterial count, like where you will be evaluating the bacterial count. Then the total fungal count in terms of Aspergillus and Candida also sometimes you check. And then the four bacterial pathogens. Since you guys belong to the microbiology background, and I'm also masters in the microbiology, so you can remember there are the four pathogens that has to be tested in the each and every raw material to the finished product. One is E. coli, okay. Second is Pseudomonas. Third is Salmonella. Fourth is Staphylococcus aureus. E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, and Salmonella. So these four pathogens has to be identified, has to be traced out in the raw material. And their limit, what are their limits in the product? They should not be present. There should be the nil. ऐसा नहीं है कि उसकी एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, तीन कॉलोनी आ जाए, नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए. ये चारों पैथोजेंस रॉ से लेके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक नहीं होना चाहिए. करेक्ट ना सर? यस. तो ये है. तो ये जो टेस्ट अगर आपने कर लिया है, जब आपने माइक्रोबियल टेस्ट कर लिया है, हेवी मेटल पास कर दिया है, पेस्टिसाइड्स पास कर दिया है, फिजिको केमिकल टेस्ट पास हो गया है, ऑर्गेनोलेप्टिक पास हो गया है, उसके बाद जो फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे आयुष का हो, चाहे WHO का हो, US FDA का हो, उनके भी कुछ सर्टेन एनालिसिस होते हैं, वो आपको करने हैं. तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो हर्ब है वो पास हो गई है क्वालिटी कंट्रोल से. तो देखिए अभी तक हमने तीन चीजें सीख ली. मैं रॉ मटेरियल का सिलेक्शन ऑफ हर्ब सीख लिया कि कैसे कैसे करना है, हाउ वी विल सेलेक्ट द हर्ब. सेकेंडली वी हैव चेक द रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेशन, एंड थर्ड द क्वालिटी कंट्रोल. So step by step we are going for the product development part. Okay. And now we have selected all the herbs based on the like all the compliances. So now you will process the particular herb for the product development. So basically the herb which you will select, which is a fresh herb. If I take the neem leaves, so these are the fresh leaves which are present in the plant. So I have taken out these leaves, okay. And then, but the fresh leaves has contained so much moistures and other contaminants also. So, and so I have to expose the active content which are present in the herb for the therapeutic benefit. So what I will do? I will do the cleaning of the leaves. I will dry those leaves and I will grind it. Okay. So once you have done this process, so you must have this powder. Okay, which is we call as raw powder. So this is about the like how we are preparing the simply a raw powder of the neem leaves. Neem leaves powder ऐसे बन गया. Then you will check the powder का जो एक है, you will check the size of the like what are the size of this particular powder. So how you will check? So there are the different mesh size filters are present.
So we will go through those. So on the basis of the mesh size, it is retaining over it or the down it. It actually optimize the size. तो जितना कम साइज होगा, देखिए याद रखिएगा, जितना कम साइज होगा आपके रॉ मटेरियल का, उतना ही उसका थेरेप्टिक बेनिफिट होगा. तो जैसे हम नैनो साइज की बात करते हैं ना, विल टॉक अबाउट द नैनो साइज. सो दैट मीन्स कि लाइक नैनो साइज क्या है, हम बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल आर मोर एफिशिएंट इन कंपेयर टू द नॉर्मल. So in that scenario, in Ayurveda also, like the size, if it is lesser, means like more therapeutic benefits. So once you have the make the powder, you have checked its size through the filters, the mesh size, and then you are able to know like this is the particular low size, which is the more efficient for as a therapeutic benefit. Then you will check its storage conditions. Like you have to see like what is the temperature, what is the humidity control. So as Dr. Saket, he has previously worked in the pharma companies. So he knows like how critical these points, temperature and the humidity, these both are the critical point of any storage area. So you have to ensure like the temperature of the particular area and the humidity should be in the as per the compliance. So basically we have the daily calibration record also. We have the weekly calibration records. We have the weekly data record, monthly data record. So we have to maintain the storage conditions. So based on that, you have stored your herb powder. Okay. अभी बात आती है इसके बाद कि सर अभी हमने रॉ पाउडर तो बना लिया है, लेकिन अभी रॉ पाउडर तो आपको जानते हैं कि जब भी हम किसी रॉ पाउडर की बात करते हैं तो वी हैव टू टेक इन a huge amount. So in that scenario, we'll go for the extraction process. So in that, उसमें क्या होता है कि once we are doing the extraction, like you are reducing its size, but increasing its therapeutic benefit. So basically, you are making the concentrate. You are trying to extract out the actives in a more rich or more concentrate form from the raw material. So this is all about the extraction process. So पहले क्या होता था कि जब मतलब जब ये सॉल्वेंट सिस्टम्स तो अभी हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट सिस्टम हैं. तो पहले क्या होता था कि जब ये इस तरह के सॉल्वेंट सिस्टम नहीं होते थे तो यूजली वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्शन किया जाता था. तो उसको हम बोलते हैं डिकॉक्शन, क्वाथ जिसको बोलते हैं आयुर्वेदा में. तो अभी क्या है कि देयर आर सर्टेन मेथड्स अभी आ गए हैं, लाइक सॉल्वेंट बेस्ड मेथड्स भी है, सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन मेथड भी है, स्प्रे ड्राइंग वाला भी प्रोसेस होता है, और माइक्रोवेव हीटिंग वाला प्रोसेस भी है, अल्ट्रासोनिकेशन वाला प्रोसेस भी है. सो देयर आर द सर्टेन प्रोसेस. तो जैसे जैसे इन प्रोसेस का आप यूज करोगे, जितना आप एडवांस में जाते जाओगे, तो उतना क्या होगा कि आपके जो एक्टिव्स के कंसंट्रेशन वो बढ़ता जाए, और जो इनएक्टिव्स हैं जो कि हम आपको चाहिए, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो घटता जाए. तो जैसे जैसे एक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा कि जितना कम डोज रहेगा प्लांट का, उतनी कम डोज में वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो यही एक्सट्रैक्शन की ब्यूटी है और यही एक्सट्रैक्शन का सिग्निफिकेंस है. तो जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि देयर आर द मेथड्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न. सो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे डिकॉक्शन है, आपका इन्फ्यूजन हो गया. तो इन्फ्यूजन क्या है, जैसे आप जो ग्रीन टी नहीं पीते हो, आप ग्रीन टी पीते हो उसमें जो आप टी बैग को डालते हो, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्यूजन. ये इन्फ्यूजन प्रोसेस है. एंड मैसरेशन क्या होता है, मैसरेशन में कुछ नहीं करना है आपको, बस ओवरनाइट रख देते हैं, उसमें कोई शेकिंग नहीं, कुछ नहीं, आपने हाथ को रख दिया है पानी में डाल के, और वो मैसरेट होता रहेगा, धीरे धीरे वो आता रहेगा बाहर. दिस इज अबाउट द मैसरेशन प्रोसेस. एंड द परकोलेशन, परकोलेशन में क्या होता है, एक परकोलेटर रहता है ऐसे इस तरह का कॉनिकल शेप में, और वहां से आपको पास करते हैं, सॉल्वेंट ओवर टाइम चलता रहता है, वो धीरे धीरे परकोलेट करके वो मटेरियल आता रहता है. सो दिस इज अबाउट द क्लासिकल टेक्निक्स. और अभी जैसे आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अमेठी में, अमेठी इज द वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और आई एम थैंकफुल टू द अमेठी faculties and for my career development also, because since I'm an alumni of the Amity, so I know like how much hard work this professors does in the Amity to development of the students. So I think you should clap for this, that for your professors and hard work and this one. This is very important. Okay.
अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप बात करते हैं एडवांस टेक्निक्स की, सो आई मेंशन अबाउट द सॉक्सलेट, सुपर क्रिटिकल्स, अल्ट्रासोनिकेशन एंड स्प्रे ड्राई. So these are the advanced techniques for the extraction process. So once you are using this technique for the extraction, so as I mentioned, like you might get more active concentrations and more richer concentrate. So that can be used further for the product development. और जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले क्या होता था कि वाटर एज ए सॉल्वेंट था, उसको ही हम यूज करते थे. और अभी हमारे पास है जैसे इथेनॉल भी है, और हाइड्रो अल्कोहलिक मीन्स हाइड्रो प्लस अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल इनका मिक्स करके बन गया हाइड्रो अल्कोहल. तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर बेस्ड कंपाउंड्स है वो भी आ जाएंगे, और आपके जो अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड्स है वो भी आ जाएंगे. तो इस तरह से ये हो गया है. और CO2 है, CO2 तो क्या हो गया कि आपका CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये सॉल्वेंट तो है नहीं, ये तो गैस है. तो this type of extraction is called as green extraction because we are not using the solvents. So it is a solvent free extraction. आजकल बहुत प्रचलन में है, बिकॉज अभी क्या है कि सॉल्वेंट्स की तो थोड़ी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी भी रहती है. और वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं जब हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो विल ट्राई टू इवोपरेट मच सॉल्वेंट. सर को भी पता होगा, सर भी जानते हैं, क्योंकि एक रेजिड्यू सॉल्वेंट करके एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर, जिसमें सारे आइसोप्रोपेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल सारी की हम की सॉरी की जाती है. लेकिन फिर भी to overcome from this toxicity part, nowadays we are following this carbon dioxide based technique, which is the supercritical. So I will share this slide with Dr. Gaurav. So like you can see, like this has I've been taken from the AI, this one. So I think like you must use this advanced technique also. So by that AI na, like they have mentioned beautifully like all the extraction technique in a like single images. So you can refer these slides later on. Okay. Shall I come to the next slide? Okay, thank you. Okay. Yes. So this is actually मेरा जो सबसे अच्छा पार्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना. जैसे वी टॉक अबाउट लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी. So they have put the some standards. So similarly, like for the extracts also, like we have to put some standards for those. Like, yeah, this is the Giroy extract, this is the Ashwagandha extract. So how will put these standards for these extracts? By some analytical testings, by some advanced techniques, by some batch to batch consistency checking. So as I mentioned, analytical techniques. तो अभी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मतलब अभी बीइंग ए हर्बल साइंटिस्ट मैं बताता हूँ. जैसे कहीं पे मर्डर हो जाता है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट जाते हैं ना फोरेंसिक एक्सपर्ट्स. वो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स को लेते हैं, चेक करते हैं, हाँ भाई इसका फिंगरप्रिंट मैच कर गया, इसके साथ एक क्राइम किया है. तो सिमिलरली प्लांट का फिंगरप्रिंट लिया जाता है HPTLC मशीन से, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. वो उसका फिंगरप्रिंट है, मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट है, और वो सेम रहता है. उसमें चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत 10% 20% बेस्ड ऑन द नेचर, लेकिन वो एक ऑथेंटिकेशन है आपका रॉ मटेरियल, आपके बैच टू बैच कंसिस्टेंसी का. तो सपोज अभी आपने डॉक्टर आशीष ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, अब डॉक्टर आशीष तो चले गए वीनस को छोड़ के. डॉक्टर आशीष ने कहाँ से रॉ मटेरियल मंगाया था, उन्होंने चेक किया, HPTLC करा दी. लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर आशीष के बाद पता लगा डॉक्टर साकेत आ गए वीनस में, या डॉक्टर गौरव आ गए, या आप में से कोई आ गए. तो वो चेक करेंगे HPTLC से, अच्छा सर HPTLC का डेटा मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स रॉ मटेरियल इज ऑथेंटिकेट, उसके फिंगरप्रिंट मैच कर. तो दिस इज अबाउट द HPTLC. नाउ कम टू द HPLC. वी ऑल नो लाइक HPLC तो आप सबको पता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, separation of mixtures. There are certain compounds, there are several compounds are present in this particular the sample.
but you are trying to isolate or quantify the particular compound. So you will be doing the HPLC based on the some solvent system, based on some column, based on the HPLC conditions. You will able to evaluate this particular compound from that raw material or from the extract. तो जैसे मैंने एग्जांपल देके चल रहा हूँ अभी अश्वगंधा का, तो आपने क्या है कि विथेनोलॉइड्स का क्वांटिफिकेशन करना है, तो वो आपने HPLC से कर लिया, पता चल गया कि यस विथेनोलॉइड इज प्रेजेंट एंड इन दिस मच क्वांटिटी इन द, तो ये आपका खत्म हो गया, HPTLC खत्म हो गया, अब HPLC खत्म हो गया। तीसरा आ गया GCMS। अब जैसी GCMS की बात आती है तो आप ये समझ लो कि हर ऐसे कंपाउंड को करना है जो वॉलेटाइल है नेचर में। तो वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है, जानते हो आप लोग? डू यू नो वॉलेटाइल? व्हाट इज द वॉलेटाइल? सब आगे पीछे देख रहे हैं। वॉलेटाइल मीन्स होता है लाइक वॉलेटाइल उड़ गया, जो एवोपरेट हो गया। so this is about the volatile. So the volatile nature, जैसे हमारा volatile memories होती है ना, अभी कुछ पढ़ा और गायब हो गया, वो volatile हो गया। So this is about the volatile. तो स्टूडेंट्स ये हमारे टाइम में भी थी, हमारी मेमोरीज भी volatile होती थी, मतलब पढ़ा और चला गया उड़ के। तो similarly like volatile, the compounds which have tendency to the evaporate. So basically the low molecular weight compounds, जैसे हम लोग बात करते हैं, we'll talk about the essential oils, fatty acids. So they usually done by the GCMS, gas chromatography. For the low molecular weight compounds, for the molecular this volatile compounds, we prefer this GCMS analysis. Now come to the LCMS. So LCMS is the beauty. They can do analysis for the volatile and the non-volatile compounds, and the more precise, because since they have the mass spectroscopy attached. So based on the mass by charge ratio, we can identify the compound exact mass, and based on that we can identify the compound nature or the compound identification we can do. So you have done all the marker compound identification by these techniques. So afterwards you will be having the quantification data, you will be having this how much quantity is present. Then as I mentioned, अगर मैं चला जाता हूँ, कोई भी चला जाता है, तो बैच टू बैच कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो इन तीन चीजों के साथ। आपने पहले आइडेंटिफिकेशन कर दिया है, क्वांटिफिकेशन कर दिया है, अब नाउ यू कैन चेक बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। तो इसके बाद से क्या होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है एक्सट्रैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे क्रिटिकल पार्ट है हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का और टेस्टिंग। सो दिस स्लाइड इज ए की स्लाइड ऑफ दिस होल पीपीटी, होल प्रेजेंटेशन। Shall I move ahead? Okay, thank you. Okay. So अभी तक क्या, अभी तक हम लोगों ने शुरू से मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ। हम लोगों ने इनिशिएट किया था रॉ मटेरियल से ऑथेंटिकेशन की। पहले तो हमने सिलेक्शन ऑफ हर्ब किया, सिलेक्शन हो गया हर्ब का सबसे पहले, फिर हमने रॉ मटेरियल को ऑथेंटिकेशन किया, क्वालिटी कंट्रोल्स किए, फिर हमने स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट्स देखे कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, फिर हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया एक्सट्रैक्ट। ये 5 चीजें हो गई अब आपकी। अब आप आ जाओ फॉर्मूले बनाने के, मतलब अब आपकी प्री फॉर्मूला रेडी हो गया सारा, प्री फॉर्मूला की जो रेडी है सारी चीजें हो गई। अब आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है, व्हाट यू विल डू, यू विल चेक लाइक व्हाट आर द हर्ब्स यू हैव टेकन, लाइक वेदर इट इज अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, नीम, पीपल, जो भी आपने लिया है, वट एवर यू हैव टेकन, whether these ingredients are compatible to each other or not. So you will be checking the herb to herb interactions. So how you will be checking? You are combining those herbs together. एक तो वो हो गया कि you are be checking based on the literature also. And afterwards, if you are clubbing like 2 or 3 herbs, you will be checking the compatibility based on the literature as well as their active quantifications or whether this stability also, और उनका जो आपका जो फॉर्मेट बन के आया है, जो ग्रेन्यूल्स बन के आया, जो भी बन के आया, उनका फिजिकल एवोल्यूशन, बेस्ड ऑन दैट you will be checking these ingredients compatibility. So once these excipients or once these ingredients are compatible to each other, then you will be adding some binders, stabilizers, preservatives for making the different formulations type, like tablet हो गया, capsules हो गया, syrup हो गया,
So based on that, you will be preparing your pre-formula. Then this pre-formula has to be soluble in water, because हम लोग water से ही लेते हैं medicine तो. It has to be a proper disintegration time, DT. It has to be at the proper dissolutions. It has to be a proper flow. It has to be a proper Cars index. So ये बहुत सारे there are the basic this pre-formula के parameters होते हैं, formula के parameters होते हैं. उनको आपको check करना है. Then you will go for the dosage format. You will make that granules, compression machine में डालेंगे. Then you will prepare the tablets. If you are not putting the tablet, then you put this granule directly filling into the capsules. For the syrup, you will be taking some liquid base and preparing the syrups also. And for the cream, you will be taking some cosmetic base and you will prepare the creams also. So how you can do the dosage format? So based on the compatibility of the excipients, ingredients, and their solubility and their physicochemical analysis, you will finalize the dosage format. Shall I move ahead? So as I mentioned about the excipients, so binder है, disintegrants हैं. So इनका selection आपको करना है. You have to select and you have to optimize their concentrations, like how much binder can go. और binder इतना जाना चाहिए कि वो bind करे properly, उसका strength maintain रहे tablet. The shelf life you are claiming, if you are claiming the shelf life of 2 years, so that means 2 years means like आप जैसे medicine देखते हैं, strips देखते हैं medicines की, उसमें expiry लिखी रहती है 2 years, 1 year, 6 months, 18 months. So it is based on the stability analysis. और ये स्टेबिलिटी किससे आती है? जो उसके साथ बाइंडर्स जुड़े हुए हैं, जो उसके साथ डिसइंटीग्रेंट्स जुड़े हुए हैं, वो उसको प्रॉपर्ली बाइंड करके रखते हैं. वो स्टेबलाइजर्स उनको प्रॉपर्ली बाइंड करके रखते हैं. सो दैट्स व्हाई यू डिसाइड दिस पर्टिकुलर एक्सिपिएंट्स एंड यू प्रिपेयर द प्रोटोटाइप्स. द लैब प्रोटोटाइप्स हम उनको बोलते हैं. जब हम लैब में बनाते हैं तो उसके बाद उसको पायलट स्केल पे लेके जाते हैं, फिर हम कमर्शियल बैच लेते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं. इस तरह से देयर आर द सर्टेन स्टेप्स फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. So you will be actually optimizing the whole process. As I mentioned, granules आपने बना लिए हैं, tablets dosage form आपने बना लिए हैं, and कुछ जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, आपको करना है, encapsulation process हो गया, emulsification हो गए. So those process also you have to optimize. So how you will be developing the formula? Shall I move ahead? Okay. So this part is also key part, because ऐसा नहीं है कि कोई आपने प्रोडक्ट बना दिया. Suppose I take the example of this this one. So these are the product which our team has generated. So if I take this product, see, this is a pain emulsion gel, basically used for muscle stiffness and other thing. So ये अब ये क्या है कि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद आपने सीधा इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया. नहीं, you have to do the Can you show stability. it again? Actually, Yes, anything? Anybody is saying something? to show this item again, because video was on. Okay, it's a cream ointment. It's a Dr. Gaurav, it's a reset soothing gel. Okay. It is one of our premium product. So basically like अभी ऐसा होता है ना डॉक्टर गौरव की, जब अपने प्रोडक्ट आपने बना दिया तो उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस बहुत जरूरी है. वो सबसे जरूरी है. ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आपने बना दिया कि मतलब आपने मतलब आप कहीं के किंग हो गए हो. नहीं, important thing is the product has to be stable for certain period, for the certain time, the shelf life which you are claiming. So इसमें क्या होता है कि there are the two types of studies in the shelf life claim. Like you will be doing the accelerated means you are putting product in a stress condition for a short period of duration, like for the 6 months. So if that product like able to retain its active part or the efficacy,
for the up to the next 6 months. So you can claim the shelf life up to the 2 years. You can predict the. And another is the real time. Real time में ऐसा होता है कि 2 साल की शेल्फ लाइफ लेनी है तो 2 साल तक स्टडी करनी है स्टेबिलिटी. एसिलरेटेड में आपको 6 मंथ्स काफी है. 6 मंथ्स आपने कर ली तो आप 2 साल तक का क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप 6 मंथ्स में ही उसको प्रोडक्ट को ऐसी कंडीशन दे रहे हो, स्ट्रेस कंडीशन दे रहे हो कि वो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 साल तक चले. और रियल टाइम में you will be doing stability for the next 2 years, and afterwards you will launch that product and able to claim the shelf life of the 2 years. So both of them are necessary or any one is fine? We have a query, Dr. Ashish. Yeah. That's why I stopped you. Yeah, Dr. Geeta is asking whether it is compulsory to do both the stability testings or any one of them can be done. No, it's anyone you can prefer. Like especially in the herbal product, accelerated or enough. Like you can do the okay, it is okay with the accelerated. But in case of injectables, if I talk about the injectables or critical items, like real-time stability is must, because where you are dealing with the patient life actually. So most of the compliance, as I mentioned, ICH actually accept accelerated and the real time. But sometimes like the US FDA and other regulatory compliances, they look for the real time stability analysis. Am I able to answer your query, madam? Yes, sir. Dr. Gaurav, you stand here. Only. Yes, sir. Yes, it is answered. Thank you, madam. Thank you so much. Yes. So afterwards, once you have prepared this product, stable product, so you will be checking this पैकिंग मटेरियल, पैकेजिंग कंसिडरेशन. अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी जो बता रहा था, अब ये जो पैकिंग मटेरियल है, सो यू हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर, ये भी पैकिंग मटेरियल है बाहर जो है, सो यू हैव टू सी लाइक वेदर दिस पैकिंग मटेरियल आर ऑप्टिमम फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट. अभी पता लगा कि इसमें कुछ डाला और ये लीकेज करने लग गया. अब ये तो खुला हुआ प्रोडक्ट है, ये लीकेज तो देखो, ये बिल्कुल क्लोज है. ये ऐसे आपको देखना होता है. और इसकी स्टेबिलिटी आपकी एनालिसिस चलेगी, इसकी भी आपको स्टेबिलिटी करनी पड़ती है प्रोडक्ट की भी, पैकिंग मटेरियल की. तो इसमें भी आपको चेक करना पड़ता है, लाइट का, एयर का, मॉइस्चर का प्रोटेक्शन होना चाहिए. तो ये सब चीजें होती हैं. सो पीएम जो है पैकिंग मटेरियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, बिकॉज सिंस योर प्रोडक्ट इन दैट पैक, सो प्रोडक्ट के साथ साथ पीएम पैकिंग मटेरियल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. करेक्ट. दिस स्लाइड हो गया, आगे चलें. Sure. Okay. Now come to the important part, the scientific part. अब ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट तो कंप्लीट हो गया अभी हमारे साथ. Clear to everyone the product development part? Okay, I think they are not saying, they are neither saying yes nor saying no, so I think it is clear to everyone. So preclinical and clinical evaluation, so it is very important. Like the product which Actually, sir, they are saying yes, but actually, I think it's not audible because they are yeah, switching. okay, I got it. So we'll check the preclinical safety and this clinical studies, clinical trials, ethical clearances. So in the preclinical means like in vivo studies, you will be doing in the rats, mouse, rabbits. So you will be doing in the animals this study. So you will be checking its toxicology part. So you will be checking this particular herb or the particular product or particular extract is non-toxic, or is it toxic at a higher concentration in compared to the therapeutic dose. So you will be checking by the preclinical studies. So once this preclinical establishment has been done, so for the herbal product or the herbal supplement, it is okay, like you can go with that. But in terms of pharma products, this has to go through the clinical efficacy and the safety studies, like in the human. So it must go for the human trials. So we all know like there are the 4 phases.
of the human trials, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, based on the patient number and decide. So after phase 4 studies, and where we found this product is safe and effective, we launch this product in the market. And parallelly, we will be looking for the ethical and regulatory approval process. So we will be checking like there is a no conflict of interest from the other companies, and the regulatory process. Like if you are looking for like Tanzania, so you will be checking the Ministry of Health, Tanzania regulatory compliances for this product. So I take one more example. This one. This oil is a specifically export to the Tanzania. So we have taken the regulatory compliances for the Tanzania country. So it has been audited by the Ministry of Health of the Tanzania for this particular product category. So once you have passed this all the compliances, all the tests from the regulatory authority of the particular country, you will get the approval, and you will get this free sale certificate FSC. So where you can supply this product in the market. So this is about the preclinical and the clinical evaluation. Okay. Following to that, once the compliance, you are following the regulatory guidelines. So as I mentioned, specifically Ayush, WHO, FDA, European medical authorities. So once you have all the regulatory guidelines, as I mentioned about the Ministry of Health from the Tanzania or any other country, so you have all the regulatory guidelines. So you will prepare a dossier. So dossier means the bunch of data, the bunch of data set, a bunch of documents in a single format. So you will submit those documents to the regulatory authority. They will review those documents, as well as they can visit your site, or they can do the audit at the manufacturing site. They will check like, is there any gap between the documents and the presence and the physical appearance. So like you have to ensure like whatever documents or whatever data you have sent to the regulatory, it has to be matched in the physically once they are auditing there. So this is about the dossier preparation and its importance. Then definitely you will go for the intellectual property, like company will look for the patents and the trademarks to keeping this product intact with them only. So this is their aim and motto, like they can hold the market in a proper way. This is I'm able to show if it's visible to everyone. Bolo, bolo. So this is one of our product which have been taken from the Indian patent 299151. So this is pain emulsion. So it is a natural base pain emulsion which is used for the inflammation and other things. So it has been taken patent. So no one can copy it for the next 17 years. Afterwards, they can take this patent forward. Thank you. And next slide. So once you able to product development lab part, so you will check for the scale up. You will go for the scale up part from the lab to the industry level. So usually what happen when you are like scale up the product. So once you have prepared the lab batch, this is the first step. Then you will prepare the pilot batch. Pilot batch means ऐसा हो गया कि जैसे लैब बैच बनाया आपने 1 kg का, ओके, दिस इज 1 kg का लैब बैच हो गया, लैब में जो बना दिया 1 kg मटेरियल बना दिया. पायलट बैच हो गया जो आपने बना दिया 10 kg का, 10 kg का पायलट बैच आपने लैब में बना के देख लिया है. तो दिस इज विच यूजुअली हैपेंस इन द पायलट प्लांट. सो लैब में एक बैच बना लिया छोटा सा, उसको स्केल अप करके देख लिया पायलट बैच में, और जब पायलट बैच की और लैब बैच की कंपेटिबिलिटी आई है, मतलब जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत चलता है 5-10%, then you will go for the industrial batch, like the larger batch. So basically we call this industrial batch as validation batch. You will be validating your product actually in the particular conditions in the industry, in the manufacturing facility. So once this validation batch or industrial batch is compliance with the lab batch,
or compliance with all the regulatory part, you will go with the commercial batch. So you will launch this product in the market. So this is very important: lab batch, pilot batch, industrial or validation batch, or the commercial batch. So by these 4 through, you will launch the product in the market. So what you will look when you're looking for the manufacturer or for the industry, you will look for the GMP compliance, the good manufacturing practice. This is one more another important topic, good manufacturing practice. It will take another day to explain about the GMP. So we'll not go through with the detail. GMP means like simply like the day, all things in a align, like whether it is a man, machine, method, or the environment, nature of the industry. So it has to be the aligned, it has to be the documented, which is called a GMP, good manufacturing practice. Similarly, in your lab, you do good laboratory practices, GLP. So in industry, we follow the GMP, good manufacturing practices. We do the practices in a good manner, which is called as GMP. So once you able to launch this product in the market, you will be looking for the marketing and consumer awareness. So it can be by the social advertising, it can be by providing the promotional events. So by that you can like spreading your product in the market. Clear to everyone? Okay. This is just I have taken one of the reference for this one. Like what are the different herbal forms can be possible. So like from right beginning from the plant to extraction. So these are the different formulation forms like juiceage, oils, extraction, decoctions, powders. So these different kind of forms can be prepared from a single herb. So as I mentioned already, the QC part, so which is similar to the standardization part. So why it is important? As I mentioned, this is one of the key slide. So it is important to establish identity, purity, and quality. These are the 3 important parameters: identification, purification, and the quality. So these 3, batch to batch variation नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, सेफ्टी एंड एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, और ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए अब ये अश्वगंधा आप यूज कर रहे हो, सो एक उसकी एक्सेप्टेंस लिमिट है मिथेनॉलॉइड्स की कि इतना परसेंट होना चाहिए, 4%, 5%. सो इफ somebody is using the Germany also, so he will be complaining like I will be using the methanoid, I will use the methanoid rich ashwagandha in a certain, which is containing the certain amount of the methanolides. So like specific for the standards. So this is important. Now come to the challenges. Like what are the challenges in the herbal drugs? So there are several challenges. I've just put down like 4 challenges. Like one is the natural variations. अब बहुत ही बेसिक रहता है, जैसे सूरजमुखी का प्लांट है, सनफ्लावर है, अभी सनफ्लावर का फ्लावर आप मॉर्निंग में तोड़ो, सो इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज देर आर द मोर एक्टिव फॉर्म, एंड अब आप इवनिंग में तोड़ रहे हो उस फ्लावर को जो कि अभी खिला हुआ नहीं है, बिल्कुल मुरझा गया है, एकदम श्रिंक हो गया है, तो उसके डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे. तो नेचुरल वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको तोड़ने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग करना. हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसे ही वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट. क्लाइमेट में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. हिमाचल का सेब, मैं बद्दी में हूँ हिमाचल में, तो हिमाचल का सेब अलग है और आपका साउथ में उगने वाला सेब अलग है. अगर साउथ में कोई प्लांटेशन कर रहा है एप्पल, या कश्मीर में जो प्लांटेशन कर रहा है, तो ये हो गया अबाउट द क्लाइमेट. सिमिलर टू द सॉइल ऑल्सो, लाइक द सॉइल विच इज लाइक मोर फर्टाइल, कोई इनफर्टाइल है, कोई लेस फर्टाइल है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड्स के साथ कर रहा है.
तो ये वेरिएशंस होते हैं, ये दैट ऑल्सो मेक्स द चैलेंजेस। अब क्या होगा कि एक बार तो रॉ मटेरियल मैंने मंगा लिया हिमाचल से, एक बार रॉ मटेरियल मंगा लिया मैंने तिरुवनंतपुरम से, केरला से, तो आप देखिए कितना वेरिएशन आ गया, उसके कंपाउंड्स में वेरिएशन आ गया, उसके बिहेवियर, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस में वेरिएशन आ गया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है। और दूसरा समटाइम क्या होता है कि अभी जैसे हिमाचल में फ्लड आया हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो एप्पल है वो खराब हो गया है, और मेरा सप्लायर तो हिमाचल से दे रहा है, तो वो वेरिएशन आएगा इस बार, मटेरियल जो आएगा उसमें। तो ये नेचुरल वेरिएशन बहुत बड़ा चैलेंज है हर्बल ड्रग्स में। फिर दूसरा अडल्ट्रेशन, everyone looks for the benefit, the profit in their organizations, so they usually adulterate these herbs by using some low cost or non-efficient material, adding that. And the third thing is the lack of universal standards. Since India and China and the Thailand also, they are the premium countries for the exporting of the herbs and the extracting of the herbs. So there are not much universal standards are available. अभी तो एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है, अभी तो देख रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं प्लांट्स के, तो वो भी नहीं है, देयर आर द लेकिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स आल्सो। एंड नाउ कम टू द फाइटोकेमिकल मिक्सचर कॉम्प्लेक्स, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ जैसे पेनिसिलिन की, एम्पिसिलिन जो ड्रग है, उसमें एक साल्ट है पेनिसिलिन। हमारे मिक्सचर में, हर्बल मिक्सचर में, देयर आर द सर्टेन टाइप ऑफ कंपाउंड्स, not the compound, there is a certain classes of the compounds, alkaloids, flavonoids, phenolics, glycosides, terpenes, monoterpenes, polyphenols, ये तो क्लास है। अब इनके अंदर कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, कोई लो वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल, कोई मिड पोलर, कोई हाई पोलर, तो मतलब कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द फाइटोकेमिकल्स, सो दैट इज आल्सो चैलेंज। लाइक you cannot focus only the single actives. Sometimes the other actives which are present in the traces also, they can have the therapeutic benefits. So it is a complex system. It is very complex. So these are the four or five challenges which actually has to be addressed and which has to be looked for once we are preparing the herbal drug. So these are the already we have discussed about the parameters for the standardizations. Already I mentioned like macroscopic, physicochemical, phytochemical, chromatography, DNA barcoding. And as these guidelines also we have discussed, like it can be from the WHO monograph, Ayush, US pharmacopoeia, European pharmacopoeia, regulatory compliance. तो regulatory क्या करता है कि मार्केट को एक्सेस देता है, आपके बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, आपको मार्केट के लिए ओके है। तो जैसे अभी बात करूं मैं यूएसएफडीए की, सर जैसे बात कर रहे थे, सर ने बोला था एनसी, सर आप एनसी मत बोलते सर, मुझे डर लगा था अभी एनसी से, तो एनसी की बात कर रहे थे सर। तो एनसी की जब बात करते तो मतलब वो एकदम हार्ट बीट बढ़ा देता है एकदम, फार्मा 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 मतलब फार्मा वाले साइंटिस्ट को, मतलब जो काम करते हैं फार्मा में। तो ये क्या करते हैं, ये जो गाइडलाइंस है, यूएसएफडीए है, यूएसपी है, ईपी है, यूरोपियन कमीशन है, ईसी है, तो ये क्या करते हैं, दे गिव द एक्सेस टू द मार्केट। इफ यू आर कंप्लाइनिंग विद दिस गाइडलाइंस, आपको कोई टच नहीं करने वाला है, nobody is going to touch you because you have already complied with this guidance, so your product is safe and it is more uh, more consumer friendly basically. So as I mentioned earlier also, so these are the different analytical techniques. By these you can standardize the extract or the material like TLC, HPTLC, spectroscopy, UV, IR, मार्कर कंपाउंड जैसे फिथेनोलाइड्स की हमने बात की थी, फिंगरप्रिंट भी आपको इंश्योर करता है कि बैच टू बैच वेरिएशन ना आए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। सो ओवरऑल, सो हर्बल फॉर्मुलेशन, अभी जैसे ये सारी स्लाइड ना अभी 3 पॉइंट्स में हो गई है, देखा जाए तो अगर हम बात करें तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। लाइक वन इज द हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या है, जो मैंने शुरू से बात की थी, ट्रेडिशनल साइंस प्लस मॉडर्न साइंस, दोनों को कॉम्बिनेशन है हर्बल फॉर्मुलेशन। इधर ट्रेडिशनल जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है,
इधर मॉडर्न साइंस, जो एनालिटिकल टूल्स हैं या फार्माकोलॉजिकल एविडेंस, दोनों मिलेंगे तो हर्बल मेडिसिन बन जाएगा। ठीक है, जब ये हर्बल मेडिसिन बन गया तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका क्वालिटी एश्योरेंस, उसका डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एश्योरेंस के मीन्स डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, स्टैंडर्डाइजेशन जो आप प्रोसेस लैब में फॉलो करते हो, स्टैंडर्डाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब जैसे आप जैसे लोग आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज द एआई, एडवांस दिस चैट जीपीटी, और ये टूल्स को हम यूज कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फर्म में, हम चेक कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं करना है हमेशा, हमें अपने डेटा को एनालाइज भी करना है। ये नहीं कि एआई ने जो दे दिया वो सही है, नहीं, हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है, अपने जो प्रोफेसर हैं, अपने जो मेंटर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेनी है, बिकॉज उन्होंने जो पढ़ा है बुक्स में पढ़ा है। एआई तो क्या है, डेटाबेस है, जो गूगल पे जो लिखा हुआ, जो चैट में जो लिखा हुआ है, उसको समरी करके दे रहा है, लेकिन आपको रिव्यू करना है उस डॉक्यूमेंट। अगर आप रिव्यू नहीं कर पा रहे तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर गाइड, मेंटर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, और जो भी एक्सपर्ट जो आपको लगते हैं उनसे, एक्सपर्ट से आप हेल्प लीजिए, बिकॉज दे हैव डन दिस ऑल थिंग्स ऑन अ प्रैक्टिकल मोड, प्रैक्टिकल मोड में उन्होंने किए। तो यू कैन टेकन द हेल्प फ्रॉम द योर मेंटर्स। एंड देयर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मेटाबोलोमिक्स, like selection of metabolites like phenolics में फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स। अभी क्या है, इसका काम आगे होने वाला है, अब एक्सट्रैक्ट से ऊपर आगे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, मेटाबोलोमिक्स के बारे में बात करेंगे, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स लाइक कंपाउंड्स, दो आपके हर्बल कंपाउंड्स हैं एज ए लाइक फाइटोफार्मा, इन कंपेयर टू एप्पल टक्कर हो रही है, बिल्कुल एकदम एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन हो रहा है हर्बल ड्रग्स का और मॉडर्न मेडिसिन का। तो ये फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हो गए। एंड उसके बाद आ गया नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई थिंक डॉक्टर गौरव ने भी आपको पढ़ाया होगा, डॉक्टर साकिब ने पढ़ाया होगा, ये मैडम ने पढ़ाया होगा। क्या होता है कि नोबल ड्रग में क्या है कि आप यू आर यूजिंग द नोबल ड्रग टेक्नोलॉजी डिलीवरी सिस्टम, जैसे आपका लाइपोसोम्स हो गए, आपका नैनो नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, नैनो डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो गए, एक्सोसोम्स हो गए। तो यू आर यूजिंग द नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, so by that you actually enhancing the therapeutic benefits but reducing the dose of their formula of the product. So this is about the conclusion part. So any question and answer, and these are my details, like you can check. Thank you, sir. Thank you so much. बोल रहे थे ब्रेकफास्ट करके आओ, तुम्हारी एज में जरूरी है, थोड़ा खा के आओ। सो थैंक यू वेरी मच सर। Sir, give me a moment, sir. Give me a moment, just. Sorry for little delay. Yes. Yes, sir. तो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। बच्चों के कितने क्वेश्चंस हो तो पता नहीं है, उनके लिए काफी भारी हो गया। अब मुझे 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने थे और एक क्वेश्चन था, विथ योर काइंड परमिशन। Yes, sir. तो आपने जो पूरा फार्म टू लैब और लैब से मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट 45 मिनट में समझा दिया, थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए, बट इट हैज टेकन मी डाउन द मेमोरी लेन्स। जो फर्स्ट जॉब ओलंपिक में स्टार्ट किया था 2001 में, so this is what we used to do. We used to optimize things. HPDLC यूज किया था, Cameg और वो सबके for optimization of formulations. फिर HPLC यूज किए थे, Simart, जो Agilent, Water, उन सबके, और पूरा डाउनस्ट्रीमिंग और वो सब। So thank you for taking me and reminding me my old days when जब ये नया नया स्टार्ट किया था काम करना, and audits और वो सब फेस करना स्टार्ट किया था। और दूसरा, डॉक्टर गौरव को थैंकफुल हूँ मैं कि आपका प्रेजेंटेशन या तो आपका सेशन इससे बेहतर टाइम पे नहीं आ सकता था, फॉर 2 रीजंस। कल ही हमारे एमएससी के 5 बच्चे QA/QC इंटास फार्मास्यूटिकल के लिए सिलेक्ट हुए। सो आई थिंक यहाँ पे बैठे तो उनके लिए काम का होगा, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो क्या करना है, दिस इज व्हाट यू हैव सीन।
और दूसरा थैंक्स इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्टर गौरव को, एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और वो सब सिखा रहा हूँ, पता नहीं उनको कितना कोरिलेट हो रहा है कि नहीं, बीएससी और एमएससी के बच्चों को. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम टीचिंग देम, लिक्विड एक्सट्रैक्शन से लेके फॉर्मुलेशंस एंड ड्रग्स एंड एवरीथिंग. सो बच्चों के लिए थोड़ा रिफ्रेश भी हो गया और उनके लिए थोड़ा आगे का भी हो गया. सो क्वेश्चंस में मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में था तब आयुष था नहीं, और आयुष इतना आगे आया नहीं था हर्बल ड्रग्स और वो सब के लिए, तो इंडियन फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया और सब यूज कर रहे थे. तो आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना था कि ये आयुष कितना एक्सेसिबल है और एक्सेप्टेड है आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया, इज इट इन इन्फेंसी और थोड़ा एडवांस हो चुका है? नहीं सर, देखिए आयुष का क्या है, लाइसेंस का क्या है, बिकॉज आयुष क्या है कि स्टेट लाइसेंस आप देते हैं. तो जैसे अगर हम आयुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विल गो फॉर द स्टेट लाइसेंसेस, लाइक स्टेट आयुष का हम लाइसेंस देते हैं. एंड बेसिकली लाइक जैसे अभी हम लोग मानो मैन्युफैक्चर करा रहे हैं किसी से भी, तो वी यूजली लुक फॉर द एनओसी फ्रॉम देम फर्स्ट थिंग, एंड देन वी लुक फॉर द एफएससी, फ्री सेल सर्टिफिकेट. तो फ्री सेल सर्टिफिकेट होता है कि वो जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है या कमर्शियल जो भी आप बना रहा है, दे आर फ्री टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दैट इंडिया, इन दैट कंट्री. सो द लाइसेंस इज मतलब एक्सेप्टेड है, वो आप ले, मतलब वो अप्रूवल है, वो आप दे सकते हो अपार्ट फ्रॉम द यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज वहाँ की उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है. लेकिन फॉर द अदर कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो भी एशियन कंट्रीज हैं, दैट इज एक्सेप्टेड, बट यू मस्ट हैव लाइक फ्री सेल सर्टिफिकेट एंड द एनओसी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. यस. थैंक यू सर. सेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है बायोटेक डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर नीलम जैन, उन्होंने भी ज्वाइन किया था. तो नीलम मैम और सर ये काफी सालों से हर्बल ड्रग्स और उनके एप्लीकेशंस और उन सब में भी काम कर रहे हैं. सो उन्होंने भी आपका सेशन ज्वाइन किया था. आई होप लाइक सर, मैं तो छोटा बच्चा हूँ जल्दी हर्बल में. नहीं नहीं, अभी छोटे नहीं हो आप छोटे थे जब अमेठी में पीएचडी कर रहे थे. Now you are नहीं, working अभी in सर आई एम जस्ट हैविंग ओनली 10 to 11 years of experience, so आई एम इन द लर्निंग फेज. तो मैं नीलम मैम का नाम इसलिए लिया क्योंकि नीलम मैम को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या और मैम, कमेंट्स मैम प्लीज. So Dr. Ashish. नमस्ते मैडम. थैंक Namaskar. यू. I have actually मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आप जब दे रहे थे तो मुझे याद आया that during COVID time there was a release of a drug called as Coronel, एक आयुर्वेदिक काढ़ा, right, by Patanjali, and उसका काफी सारा उसका टीवी पे कवरेज था, and then after a day or two it was withdrawn. उसको रोक दिया गया क्योंकि it was claiming as a treatment against COVID. And but later on they actually then because they haven't done a research for the treatment against COVID, so उन्होंने फिर बाद में as a immunobooster launch किया इसको. So it means उसका वाकई में it requires a lot of studies and evidences for getting the complete whatever you have told. तो वो चीज नहीं हुआ क्योंकि time short था maybe. तो वो controversy I just got remembered कि भाई ये हुआ था. तो ऐसा सच में था? मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज बियॉन्ड द लाइन जाके, क्योंकि क्या हुआ कि उस समय जब वो स्टडीज थी वो पायलट स्टडीज थी एक्चुअली, वो निम्स में हुई थी जयपुर में. तो देयर वर द सिग्निफिकेंट डेटा, इट इज नॉट लाइक दैट कि लाइक देयर वर द डेटा, सिग्निफिकेंट डेटा, एंड इट हैज बीन, बट द पेशेंट दोज वर सेलेक्टेड, दिस वर द माइल्ड पेशेंट्स, नॉट द लाइक सीवियर पेशेंट्स नहीं थे. एंड जब कोविड जब आया था, सो eventually क्या है कि like we were getting the severe patients also, so that drug was particularly for like mild to low patients only. So but it has been launched in that way, like it will be treating the COVID. So we were also surprised, but it was the management decision. So but there were the pilot studies, like it was the proof, like it was the evidence. It was done in the in silico also, and it was done the preclinical also. So there were the evidences. But as you mentioned clearly, like standardization is very important, and along with that validation, the drug which you are using, it has to be validated throughout the all the phases. Yes, it is very important. Yes, claims are most important thing, that whatever claims are critical actually. You do not claim, that is okay, but if you are claiming, then you have some database. Yes. Thank you so much, it was a nice one. Yeah, thank you madam, thank you so much. बच्चे पूछ नहीं रहे सर, लेकिन सोच रहे. सो यहाँ पे एक्चुअली इंटर्नशिप होता है, एमएससी का 6 months का इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होता है.
और बीएससी के लिए भी है. So किसी बच्चे ने कुछ मैसेज पास किया है कि अगर if they are interested, so is it possible that they can come and work in your company as a student internship for 6 months or summer internship or something? So Yeah, you yeah, they can come like we have some scrutiny process like for the selection of the students. So I've shared my contact details over the email also, and Dr. Gaurav also has. is also So there. they can connect with me, and definitely I will help them. for that. Like a summer internship for 2 months or a 6 months internship for Basically, like their minimum is like 3 months. Like the period has to be the 3 months. acha, minimum 3 months. Yeah, 3 months is That- That could be the problem because in summer they have 2 months of gap in between 60 days. So we will see how it can work out. But for we'll try to accumulate. We'll try to accumulate those students like those are interested. Yes. Dr. Gaurav is here. So, Dr. Ashish, thank you very much for this wonderful talk. And actually, we have asked him to keep it simple so that you guys can understand it. Sometimes what happens when we put a lot of research related information, so it goes over the top. So he tried to give you the basic overview. However, if you have any specific queries, anything coming to your mind, you can ask, because this session was for you, not for us. तो अगर आपकी कोई query है, I hope many people might be having query, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग समटाइम्स. है आपका कोई क्वेरी? They can come over the platform. They can ask. I will be happy Yes. to answer. Don't hesitate. Do not hesitate. Come in front. कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई बीमारी का देखना है, तो कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट? नथिंग. चलिए, जॉब चाहिए वो पूछ जॉब लिया, चाहिए. वो पूछ लिया. नहीं, जॉब के लिए मैं एक बात बोलता हूँ डॉक्टर गौरव. मैं कैन आई से समथिंग टू देम? श्योर श्योर. Yeah. So it is very important to all of the students, because since like you have the respected faculties like Dr. Gaurav, Dr. Saket, Dr. Neelam, these are the like pioneer in their field. And Dr. Saket, I was very happy like to know like Dr. Saket had worked in the industries also. So you guys are lucky actually, like having those kind of respected faculties. So definitely you should go beyond the AI and chat GPTs. You go directly with your professors, because they have like plethora of knowledge of the like they have read down so many books, so many chapters, so many articles, so many reviews they have done. So definitely you must go with them and take the guidance, not for the your career also, but for your the personal life also you can ask, because they have been gone through like so much personal and the professional down and ups. First thing, and the second thing is very important for the industry job. It is not important like you must have like 1 or 2 or 3 page 4 CVs. The important is you must have the skill sets, the technology, the techniques. आधा पेज का सीवी भी होगा वो भी चलेगा, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं हम ये नहीं देखते कि सीवी में क्या है, हमें देखते हैं कि जो लिखा है वो आता है नहीं आता. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आधा पेज का सीवी चलेगा, और कॉपी पेस्ट नहीं करना है सीवी को कि इसका सीवीएस से मैंने कॉपी कर लिया. नो, it's very important to set up your skills. Like it can be skills in like anything, industrial microbiology, food microbiology, fermentation, anything. So you have to set down your skills and you can come in the front of that. Thank you. One more thing I want to add here. If you will create good impression on the guest today, you will get benefit of it wherever he is sitting in the interview panel. This is not applicable on him alone. It is applicable on each and every guest we are calling here for guest interviews, conferences, and whatever. Right? So with these words, we would like to thank you, Dr. Ashish, once again for joining us. And hopefully you will be visiting very soon to Remedies University, Jaipur. Definitely will make some plan to Very visit. happy to host you. And Dr. Gaurav will take you for lunch. Yeah, sure. We all You will and go me. for- Sir, we had so many lunch together and dinners. Chaliye. Thank you. Namaste, sir.